I was never told about your beauty. Your beauty is my motherland. Okay. Your mind, your courage, your richness and abundance was not given a chance to grow deep inside me. नमस्कार, द न्यूज़ नाउ पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजत आपके साथ। आज एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं। राविया गुप्ता एएमसी में जर्नलिज्म पढ़ाती है और हमारे साथ जुड़ने का मकसद है ये लेटर इन्होंने लिखा था, लेटर टू माय मदरलैंड, जो कि 2018-19 का एक कैंपेन चलाया गया था पोस्टल ऑफिस द्वारा। और रविशंकर प्रसाद जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, कम्युनिकेशन का ही सेक्टर वो देख रहे हैं और उनकी तरफ से इनको ये सेकंड प्राइज़ मिला था। सबसे पहले मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, हम इस पर भी बात करेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके जर्नलिज्म पर। कहाँ से मैम आपकी शुरुआत हुई, किस तरह से आपका जर्नलिज्म में आना हुआ, और जम्मू से उठकर एक लड़की जो कि चाहते हैं लोग कि एक ऐसे फील्ड में ना जाए जहाँ पर ज़्यादा चैलेंजेस हो, तो आपने ये चैलेंज क्यों लिया? Rajat rightly said, being a girl, it was very challenging for me to first convince my parents that I want to step out of this place and especially step out and take up journalism as a career. Right. So it was difficult, and somehow I was able to convince my parents, and I did my graduation and post-graduation in journalism from Bangalore University. Okay, great. And each time all my friends would go back home to do their internships, and I would think, where should I go now? Because as we all know that media had limited scope. Right. So then when I was also pursuing my master's, so I never used to come back home in my vacations. I used to come back home only after a year. Okay. To do my internships there in Bangalore, which was more vibrant as far as media industry was concerned. Yes, so I used to do my internships there. Right. And I worked with the Hindu, I worked with the New Indian Express there. Okay, great. And then since my family, of course, some pulls and pressures are always Right. there. So my dad was getting retired and he wanted me close by, and Tribune had opportunities. So I joined Tribune as a sub-editor. I worked there with Tribune, and then I moved on to a magazine in Chandigarh. It was a business magazine. Okay. And then I worked with Aadhaar as IEC manager. Yes. So I was taking care of the three states. UIDAI के आप मीडिया इंचार्ज या कुछ I was ऐसा? Right. information, education and communication. So I was Okay. there taking care of their IEC activities for 3 states. Right. उसके बाद marriage happened. And then marriage happened and I got back to my बदलना शुरू roots. की चीजें। Yes, I got back to my roots. I came back to Jammu, and simultaneously I was fortunate enough that IIMC, Indian Institute of Mass Communication, जी. was setting up their campus in Jammu. So I applied there, and I thought, okay, there is a transition that is happening, and might as well start time for me to start giving away of whatever I have gained. So I Right. joined IIMC, and now I'm teaching journalism at IIMC. राइट। जिन लोगों को आईएमसी नहीं पता, एक बार हम बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, एक सेंटर स्पॉन्सर्ड एक इंस्टीट्यूट है जो जर्नलिज्म के लोगों को तैयार करने की मदद कोशिश करता है कि अच्छे जर्नलिस्ट जाएं और अच्छा जर्नलिज्म करें। मैम, अब हम आते हैं आपके जो लेटर आपने ये लिखा था, ये मैं अब चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप बताएं, ये क्या कैंपेन था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और आपने जब लिखा था किस सोच से लिखा था और क्या लिखा था कि ये सेकंड प्राइज आपको मिला? Yeah. So Rajat, ये campaign actually Department of Posts this is the campaign started by Department of Posts in the year 2017-18. So the first theme was Dear Bapu, you inspire Okay. me. So I wrote for 2018-19, which was the second campaign. Edition of this campaign. Yeah, and the theme was writing to my motherland. Okay. And for your information, like I'm pursuing PhD, so during the time I was working on a paper and I was very tightly packed because I'm married, I have my son, then PhD. Right. And I happened to see this ad in the newspaper, and the theme, which was letter to my motherland. The moment I saw the theme, I was thinking for a while, of course I am tightly packed. Right. And this is the theme.
for which the content is already flowing in my head, in my heart since ages. Okay. So I thought, if I don't write this, I did not write it for prize, I did not write for the cash prize Right. or anything. I just wrote it for the theme for which the content was always flowing in my heart and my soul. And I thought, if I don't write it, what good am I in being a journalist or being a writer, which I feel sometimes I'm born to write. So I thought, maybe because of the theme it inspired me, and because of this theme I wrote a letter. राइट. तो उस लेटर में ऐसा क्या था, मतलब क्या चीज़ें लिखी गई जो शायद अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, कुछ लाइंस शायद मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश भी की थी. आपका सेकंड प्राइज है, कुछ आप खुद से ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. Yeah. So a lot of people, I was reading the first winner's letter. He is from West Bengal. Okay. So as we all know, West Bengal is a state which has contributed literary and in right. all the fields, and Right. it has given stars to Right. India. So my letter is just the opposite of it. Okay. Then I took up, so I'll just read a few lines from the letter. The letter, right. I was never told about your beauty. Your beauty is my motherland. Okay. Your mind, your courage, your richness and abundance was not given a chance to grow deep inside me. Your struggles to keep us alive and rooted, your sacrifice, like all mothers, I'm sure must be infinite and worth telling. Right. But sadly were not told to me when I was young and wanted to create a storehouse of my own proud memories for lifetime to be shared with others once I grew up. Your share of space in my heart is still missing, and wonder if I alone would be able to fill that gap. I truly wish to, but somehow don't know the way to start falling in love with you all over again. Great. With the hope to connect with you more passionately, not in some other lifetime, but in this lifetime only. Great. This is what I thought, that the stories of our motherland. Right. When I went outside I'll tell you, Rajat, when I went outside to study, I saw people from all the states were so proud. Of their motherland, right. People from Punjab were so proud of their culture. They carried it on their sleeves. People from West Bengal were so proud Right. of their culture. People from Kerala were so proud. Right. People from Tamil Nadu were so proud. People from Maharashtra had something or the other to showcase, display their talent. And I had this inhibition. I always would feel hesitant because I thought I have nothing to display in terms of culture. So I always used to introspect, what is the reason? Am I not worth it? Am I not good enough? Right. Then I discovered where was the gap. And in this journey of finding out the gap, I discovered that somewhere the gap is that our ancestors have not passed on those stories to Right. us, which is not just my story. Right. I think each Everyone, one of right, us right, feel right. the same, that where are those stories? Right. Why have we not been inspired Right. by those stories to take up our culture on our sleeves? We Right. know nothing about our culture. So though with those thoughts I have written this letter. जम्मू में काफ़ी मैम देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं, जो नए हैं, हम लोग को तो फिर डोगरी बोलना घर में बोली जाती थी, या मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर मीरपुर से हैं, पाकिस्तान से, तो वहाँ मीरपुरी बोली जाती थी. बट अभी हम देखते हैं बच्चों को वो भी नहीं सिखाया जा रहा, ना हमें जम्मू के कल्चर के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही. अभी भी हम देखते हैं हेडलाइंस में कश्मीर ज़्यादा दिखता है. हम कंपेयर नहीं कर रहे, बट कंपेयर करने से हम कुछ डिफरेंसेस तो निकाल सकते हैं. बट उसी पर आपने एक सोचा कि क्यों ना किसी भी तरीके से हम अगर कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो ये हर एक इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है. मुझे लगता है सिर्फ अगर सरकार पे थोप दे या किसी पे भी थोप दे, वो भी एक गलत चीज़ है. आपको क्या लगता है इस पर? Absolutely. इसी थॉट से रजत आई थॉट even if I can do my micro contribution in this lifetime, Right. so that will of course change a few lives. बिल्कुल. Like I've taken up journalism to teach, so when I'm teaching, let's say 15 students, Right. so अगर मैं उन 15 students का कुछ bent of mind कर सकूं towards my motherland, जी. towards their contribution,
So I think that would be my contribution in this lifetime. एटलीस्ट खुद को सेटिस्फैक्टरी होगा और मैंने कुछ कंट्री के लिए अपने मदरलैंड के लिए एग्जैक्टली बाहर से कोई भी नहीं आएगा करने के लिए, राइट? अपने घर की जैसे सफाई हमें खुद ही करनी है. वी हैव टू टेक अप द स्वॉर्ड इन आवर हैंड्स to set the things right. If we want a utopian society, कहाँ से होगा? खुद ही करना होगा ना. So that thinking हम that चाहते हैं कि हमारा भला हो तो हमें खुद ही शस्त्र उठाने पड़ेंगे या we will have to take initiatives. In fact, I was also hesitant to talk about this earlier. But then I thought if I don't talk about this, and it is not only for me. So I shared it with my students that campaign is on. The campaign is on. Third campaign is also on. November 30th is the last day. Everybody should compete, and I was also surprised that there were over 9 lakh participants in the second campaign. First campaign over 4 lakh entries. Second campaign over 9 lakh entries. And I'm so fortunate from JNK that I've got awarded and first awarded of this particular campaign. So I think more number of people from our place should contribute. Then only we will have a recognition. इसीलिए हमारा मकसद भी ये था कि आपको हम बुलाएं, हमारे दर्शकों से आपको वाकिफ कराएं, ताकि ये जो कंपटीशंस है ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर आपको ग्रो नहीं करते, बट एज अ सोसाइटी, एज अ होल मदरलैंड के लिए आप एक कंट्रीब्यूट करने का आपको एक मौका मिलता है, और वो आपने बखूबी किया. मैम, जम्मू की अगर हम बात करें और जर्नलिज्म की, क्योंकि आप प्रोफेसर जर्नलिज्म की हैं, तो जर्नलिज्म का स्कोप किस तरह से दिखता है? जो जर्नलिस्ट यहाँ के हैं और जो आने वाली पीढ़ी है वो जर्नलिज्म की तरफ इतना सोच नहीं रही. मतलब जो अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कोई और फील्ड वो लेना चाहते हैं, कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं. पर जर्नलिज्म की तरफ हमने देखा है कि वो जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहे. किसकी तरफ से कमी है? सरकार की तरफ से क्या इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या फिर उन जो माँ बाप हैं उनकी तरफ से, या जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से कोई कमी आ रही है? Rajat, when a society evolves, so evolution happens from all the spheres, right? So first is your mindset, your own mindset of what you want to do in your life. So when you're making a choice for your career, a lot of us think of money. So and then it becomes a job, and any job after a point becomes monotonous. So मैंने तो यही सोचा मुझे monotonous job करनी ही नहीं है. I always thought that journalism is something which has a challenge every day, which makes you meet new people, and which makes you learn a lot of things. So that is what I wanted to do. तो मैंने वही career बनाया, even if salary was never a matter for me. So I think the mindset has to change. A mindset that this particular job is not good for girls or good for boys, I think that also has to change. So जब वो mindset change होगा and content पे focus होगा, so I think people would be able to appreciate our work as journalists. And जब journalists को recognition मिलेगा उनके काम का, of course it will become lucrative. जब वो lucrative बन जाएगा, more number of people would want to join in, and when more number of people would want to join in, I am sure the money would flow in, which right now is not. As we all know, the state of journalism in Jammu is not very lucrative, है ना? So each one of us will have to contribute towards it. Especially when we are on this side, we have to focus on the content of what we are producing, how we are motivating. It's not for ourselves. We are passing on the legacy. So we have to see कि इस legacy में हम क्या content produce कर रहे हैं और क्या पीछे छोड़ के जा रहे हैं. क्योंकि हमने देखा है काफ़ी ऐसे जो बाकी स्टेट्स है उनका जो रीजनल मीडिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उनके वोटर्स को या फिर जो वहाँ की सोसाइटी है उनको इन्फ्लुएंस करने में पूरा योगदान है वो करता है. बट जम्मू का मीडिया उस लेवल तक अभी काम नहीं कर पा रहा. तो because they're very rooted to their culture, and they're so proud of their culture. So जब तक हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी ना that we have to, instead of cribbing, all of us, मतलब I also consider myself to be young enough. So all the youngsters, if you look at that way, are busy sitting in a coffee shop and gossiping about the state, about our place. Now we are UP, क्या गलत है, क्या है ना? So we always look down upon Jammu. We always look down upon यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, यहाँ पे वो अच्छा नहीं है. What are we contributing? We never think that way. And the moment
moment we will start thinking what is our contribution instead of cribbing, I'm sure the change will start happening. Right. So वो काफी जरूरी है कि चेंज आए और जर्नलिज्म में अच्छे लोग आए ताकि हमें जर्नलिज्म का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है वो बढ़े. बट मैम हमने देखा है जैसे एंड ये माइग्रेशन जो हो रहा है ना ऑफ गोइंग टू बॉम्बे, ऑफ गोइंग टू दिल्ली, आई थिंक फॉर मोर मनी. सो आई थिंक वो अगर कम हो जाए, इफ वी स्टॉप देयर एंड इफ वी थिंक कि इन आवर ओन प्लेस, दिस इज द प्लेस आई हैव टू स्टैंड, आई हैव टू स्टैंड अप एंड टेक अप, दिस इज माई मिशन, दिस इज द लैंड ऑफ माई मिशन. Once we start thinking that, you will yourself see the change happening. अभी जैसे जर्नलिज्म so far जम्मू यूनिवर्सिटी में अभी तक भी नहीं है. बिल्कुल. सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एकलौती जम्मू यूनिवर्सिटी जिसमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं, बट वहाँ जर्नलिज्म का वो नहीं है. So I really wish कि there comes a day when Jammu University also starts this course. Of course, this is there in Central University, but एक higher level तक जाने के लिए more number of people have to be there. Universities will have to give this course, and I'm not comparing it with Srinagar because we end up in the petty issues between Jammu and Srinagar. But this is the fact. If you look at it, in Srinagar you have college level से ही है, गांधरबल कॉलेज में है, बारामूला कॉलेज में है, अलग यूनिवर्सिटीज में भी हैं. सो आई थिंक दिस डिबेट ऑल्सो मस्ट एक्सपैंड कि हमारे पास ये नहीं क्या क्या चीजें चाहिए. हम कई बार ऐसे मुद्दों पर लड़ जाते हैं जैसे पाकिस्तान हो गया वगैरह वगैरह, बट जो मतलब जिन चीजों ने हमारी डेमोक्रेसी को या फिर उन चीजों ने जो बच्चों के लिए जो नए स्कोप्स तैयार करने, उस पर कभी बात जम्मू वाले शायद मुझे लगता है करने पर खुश नहीं होते ज्यादा. डेफिनेटली रजत, जैसे अगर माय जर्नी वुडंट हैव बीन सो टफ to change the mindsets, because अगर वो जम्मू यूनिवर्सिटी में कोर्स अवेलेबल होता तो I am sure my parents wouldn't have fought with me for a year, and I wouldn't have had the toughest journey to convince them and go all the way to Bangalore. Of course exposure I have gained in terms of exposure, बट थोड़ा इजी हो जाता. So यही चीज़ है कि अगर जम्मू यूनिवर्सिटी स्टार्ट करती है ये कोर्स, सीट्स ज़्यादा बढ़ती हैं अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सो मोर नंबर ऑफ पीपल वुड बी एबल टू टेक अप दिस कोर्स. सो मोर नंबर ऑफ पीपल विल बी एबल टू गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज. सो ऑफ कोर्स कंटेंट क्वालिटी विल इम्प्रूव, आई एम श्योर. तो मैम ये तो हो गया जो नई पीढ़ी जो है वो तैयार होगी, बट जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, बट हमने वो एक चीज़ देखी है कि उनमें रीडिंग और राइटिंग का जो कल्चर है वो बहुत कम है. जो प्रिंट मीडिया में है ऑब्वियसली उनको लिखना पड़ता है, वो राइटिंग कल्चर फिर ठीक है, पर रीडिंग कल्चर जो है हमारे जम्मू में जर्नलिज्म में जो लोग हैं वो उतना रीडिंग नहीं करते हैं. इसका रीज़न क्या समझते हैं आप? इसका रीज़न अगेन इट कम्स टू द सोसाइटी एंड द कल्चर फ्रॉम वेयर वी कम. लुकिंग बैक ऑल्सो मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ पर इतना लाइब्रेरी कल्चर है रहा पास्ट में, और जो रहा भी उनमें से भी आई एम श्योर देयर वर न्यूज़ रिपोर्ट्स हमारी जो बेस्ट ऑफ द बुक्स हैव बीन गॉन मिसिंग, है ना. सो जब तक हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, अपनी लाइब्रेरीज को प्रमोट करने की कोशिश नहीं करेंगे एट स्कूल लेवल, बिल्कुल, तो तब तक वो हैबिट नहीं बनेगी. एंड मीडिया एज वी ऑल अंडरस्टैंड इट्स अ हैबिट है ना. मॉर्निंग में उठते ही कप ऑफ टी के साथ हमें अपने न्यूज़पेपर्स चाहिए, तो वो हम एक एज के बाद ही क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर वी वेटिंग टू बी अडल्ट टू स्टार्ट डूइंग दैट? व्हाई कांट वी स्टार्ट विद द चिल्ड्रन? बिकॉज मच बिफोर वी स्टार्ट टू राइट वी स्टार्ट टू रीड, है ना. तो वो हम कॉलेज स्कूल लेवल से आई थिंक शुरू कर देना चाहिए. वी मस्ट इंट्रोड्यूस अवर किड्स, जैसे मॉरल साइंस की क्लास, मॉरल लेक्चर की क्लास होती है, एनवायरमेंटल साइंसेस की होती है, सोशल वर्क की होती है, SPW का सब्जेक्ट है. सो व्हाई डोंट वी हैव मीडिया फ्रॉम स्कूल लेवल? बच्चों को न्यूज़पेपर्स दिखाएं, हमारे ये लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, उनको अपने पेपर्स का नाम पढ़ना सिखाएं, घर पे सिखाएं, स्कूल में सिखाएं, एंड इट इज़ आई फ्रेंडली. Instead of gadgets which are not so organic, and newspaper reading is so organic, why don't we start it from the school level? Why don't we make it compulsory newspaper hour
बिल्कुल। जैसे हमारा क्विज कॉन्टेस्ट होता है, वी हैव इनोवेटिव आइडियाज इन Right. स्कूल, तो हम न्यूज़पेपर रीडिंग को एक हाफ एन आवर डेडिकेट क्यों नहीं करते स्कूल बिल्कुल। में? सो आई थिंक जब तक वहाँ से वो शुरू नहीं होगा, वी विल नॉट हैव स्मार्टर जनरेशंस, वी विल नॉट हैव पीपल हु वुड बी हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन. अब Right. इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इज देयर ऑन फोन, Right. बट न्यूज़पेपर्स जो हैं दे ऑल्सो गाइड यू थ्रू. Right. बट Detailed एक- websites, I'm sorry you are in this business, but they don't guide the readers. Right. Newspapers guide the readers, they tell them which is the most important story. है ना? तो it is more eye friendly. आई फ्रेंड, और स्टार्टिंग में हमें लगता है कि अगर आप फोन ना देकर बुक्स पकड़ाएं, न्यूज़पेपर पकड़ाएं और अच्छी अच्छी उस पर भी अच्छे अच्छे फोटोज भी आते हैं, वो भी अट्रैक्ट करेंगे आपको जरूर ही। Yeah, and I think the और- young parents, I being myself a young parent, despite the hectic schedules, being working and other things, I still dedicate some time, if not on regular basis, at least on weekend, I read to my child. राइट, I expose him to the children magazine. राइट, I read to him so that he develops this reading habit. राइट, At least I ensure if I am outside near my gate, if the hawker has dropped the paper and if my son is around, I will definitely tell him pick up the paper and give it to your grandparents. Grandparents. So जब तक हम ये organic habits खुद में inculcate नहीं करेंगे Right. ना, we will not be able to pass it on to our younger generation. Right. So I think the young parents have a greater role to play Right. in that. So I think they should just start working on it instead of cribbing. राइट। तो इन चीज़ों पर लगातार बात चलती रहती है और हम भी रावी मैम से यही बात कर रहे थे और आपको यही अवेयर भी करना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो इन चीज़ों पर अपनी जो कार्रवाई है वो अभी से शुरू करना कर दें। और साथ ही साथ जो जर्नलिज्म में जो लोग जाना चाहते हैं, आईएमसी जम्मू में खुला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट चल रहा है, प्रॉपरली अच्छे से फंक्शन कर रहा है, पर हमने देखा है कहीं जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी वहाँ पर सीट्स फिल नहीं हो रही हैं। 50 तक सीट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी हैं, आईएमसी में भी सीट्स हैं, सीट्स फिल नहीं हो रही अभी भी, वहाँ पर भी इशू है। हमें उस गैप को भी फिल करना है और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। रावी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you आपका so much, Rajat. द न्यूज़ नाउ पर आने के लिए। और हम ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए इसलिए ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि आपको भी कुछ नया सीखने को मिले, नई जानकारी मिले। और सबसे बात जाने के बाद इस लेटर के लिए मैम को हम कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और आप भी कमेंट में हमें कॉन्ग्रेचुलेशन करके मैम को, राविया मैम को कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। फिलहाल के लिए मुझे, राविया मैम को और हमारे कैमरामैन अंकुर सेठी को दीजिए धन्यवाद। Thank you.